Assalamualaikum students, hope you all are fine. In the previous lecture, we were discussing the concept of limit and continuity, and I hope you are now well aware of these two concepts. In this lecture, we will discuss difference quotient. We know how to find the slope of straight line, but in case of non-linear function or a curve, it is little bit complicated because the slope of the curve is always changing, unlike a straight line. Therefore, to proceed further, it is good to aware by the two concepts, a tangent line and the secant line. A tangent line to a graph is one which touches the graph at a single point, whereas a secant line to a graph is one which touches the graph at 2 points. You can see in this graph, panel B, these are the two lines. A secant line, the red one shows the secant line, and the blue one is the tangent line. Because it touches the graph at 2 points. Let's suppose this is point A and this is point B. The secant line touches the curve at 2 points, whereas the tangent line touches the curve at a single point A. In the left panel, we have the graph of linear function. With the linear function, slope is constant over the domain of the function, and the slope provides an exact measure of the rate of change in the value of y with respect to change in x. But in case of non-linear function or the curve, we cannot find the exact rate of change. Instead, we can find the average rate of change. Average rate of change means the change between the 2 points, point A and B, the slope of the secant line, that gives you the average rate of change. Consider these 2 points, point A and point B. This is also a curve. Straight line connecting these 2 points is referred as secant line. At point A, the value of independent variable is x, and the corresponding value of the dependent variable can be determined by evaluating the function of x. Similarly, at point B, let x plus change of x equals to h. Therefore, at point B, the corresponding value of dependent variable can be determined by evaluating function of x plus h, यानी x and plus the change of x, या जो आपने suppose किया है कि change of x equals to h है, that is the value of x plus h is the value of independent variable, and the corresponding value of dependent variable is function of x plus h. So the difference quotient now gives you the average rate of change in the value of y. This is the final value of a function and this is the initial value of a function. F x plus h, yani x plus change of x minus function of x, and this is the change of x, that is equals to h. It gives the rate of change in the value of y with respect to change in x while moving from x to x plus h. The slope, and it also shows the slope of secant line that connects the 2 points. Okay, this is a function. How can we read this? Function of x is equals to 3x square minus 4x minus 5. Means the value of the function, the value of y, depends upon the value of x. If we substitute any number, any numerical value of x, we can find the value of a function, a value of a y. But if we substitute any non-numerical quantity for x, we can get expression for function of x or for y. Here is an example. First, we assume that x equals to 4, the numerical value. It means whenever x equals to 4, the function of x
the value of y would be 27. If we substitute 4 in place of x, if we assume x equals to a, any non-numerical value, then we can get an expression 3a square minus 4a minus 5 for the function of x. Now we cannot find a single numerical value for the function. If we substitute a non-numerical value for x, we can find an expression for function of x. So, to proceed to find out the difference quotient, we have to plug x plus h into the function in place of x. The first step to find out the difference quotient is that you have to substitute x plus h instead of x in the function. This is your function 3x square minus 4x minus 5. Then function of x plus h. If x is equals to x plus h है, then 3x plus h, आप जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम x plus h को substitute करेंगे. 4x plus h minus 5. This is a plus b का whole square formula है. इसको आप उसी से खोलोगे, a square minus plus 2ab plus b square. तो 3x square plus 2xh plus h square minus 4x plus h minus 5. इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्सपेंड कर दो ब्रैकेट को. 3x square plus 6, 3 2s are 6xh plus 3h square minus 4x minus 4h minus 5. This is the difference quotient. ये क्या है हमारे पास? जो भी हमने फाइंड आउट किया है, दिस इज फंक्शन ऑफ x प्लस h. ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू थी जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किए. माइनस फंक्शन ऑफ x है हमारे पास. फंक्शन ऑफ x हमारे पास क्या था? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. तो जब आप माइनस के साइन के साथ इस फंक्शन को ओपन करोगे तो ये आपके पास था 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जब हम इसको माइनस के साइन के साथ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 5. ठीक है, दैट इज द न्यूमरेटर ऑफ द डिफरेंस क्वोशिएंट एंड डिनोमिनेटर इज h. यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. 4x प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल आउट हो जाएगा. प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जब आप इन तमाम चीज़ों को कैंसिल आउट कर दोगे प्लस माइनस को, तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो है आपके पास 6xh प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाई h. न्यूमरेटर में से हमने h को कॉमन आउट किया बाहर. h 6h प्लस 3h माइनस 4, hh से कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस क्वोशिएंट. ये आपके पास डिफरेंस क्वोशिएंट निकल के आ गया है. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस क्वोशिएंट, दैट इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3h माइनस 4. In this way you can find the value of difference quotient that gives you the average rate of change or gives you the slope of the secant line. Now we can use this difference quotient to find the derivative. What is derivative of a function? Derivative of a function is the slope of the tangent line, or it gives the instantaneous rate of change of the function. So there is a difference between average rate of change and the instantaneous rate of change. Average rate of change is over a range, while the instantaneous rate of change is applied at a particular point. Slope of a tangent line. When we say that the slope of tangent line, it means we are discussing a particular point. Now, the instantaneous rate of change gives you a slope of a particular point, whereas the secant line, the slope of the secant line
gives you the slope over a range, over a 2 points. The average, it gives you the average rate of change. So, to find out the derivative of a function, to use the difference quotient. अगर हम difference quotient का जो हमारे पास फॉर्मूला था, that was the formula of difference quotient. ठीक है, हमने इस पे अभी लिमिट अप्लाई नहीं की, हमने कहा हमारे पास ये difference quotient का फॉर्मूला था. ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा था? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन मींस के पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो आपकी एक लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट कर रही थी. आपके पास एक फंक्शन था, उसमें आपने कहा कि ये लाइन जो है, ये एक दो पॉइंट सेकंड लाइन है जो कि ए और पॉइंट ए को और पॉइंट बी को आपस में कनेक्ट कर रही है. और जब आपने इनका स्लोप निकाला तो वो एवरेज स्लोप जो है, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो था, वो आपके पास आपने एवेल्युएट किया था, कैलकुलेट किया था यूजिंग द डिफरेंस क्वोशिएंट. लेकिन अगर मैंने क्या कहा, फ्रॉम मूविंग ए टू बी, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास यहाँ x क्या थी? x प्लस h. एट पॉइंट ए you have value of x is x, but at point b you have x plus h. ठीक है, that is x plus change of x. अगर आप इस change of x को, अगर हम कहते हैं कि ये change of x जो है ये approaches to zero हो, लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर हम इस पे, लिमिट क्या था? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा तो उसके अगेंस्ट आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. तो अगर यहाँ पे ये h की वैल्यू आपकी अप्रोच करती है जीरो को, इसका मतलब क्या होगा? when this h approaches to zero means corresponding second line approaches to tangent line. ये जो आपके पास टेंजेंट अगर आप इस पॉइंट से ड्रॉ करो तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, वेन एवर चेंज ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट पे आ रहे हो. दैट गिव्स योर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. तो अगर मैं इस डिफरेंट क्वेश्चन पे लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जो चेंज ऑफ एक्स है उसको अप्रोचेस टू जीरो करूं, तो दैट विल गिव यू द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. ओके, so if we assume h equals to z approaches to 0, we are applying now limit, means corresponding second line approaches to tangent line. The derivative represent instantaneous rate of change in the dependent variable. यानी आपके पास instantaneous rate of change means it applied to a particular point slope of a tangent line. और इसको हम डोनेट कैसे करते हैं? नोटेशन जो यूज करते हैं, dy over dx और f prime function of x is used to represent the instantaneous rate of change or the derivative of a function. जब हमने कहा डिफरेंस क्वोशिएंट तो उसके लिए हमने डेल्टा यूज किया था, डेल्टा y over डेल्टा x, but for showing the derivative of a function we use dy over dx, that is shows the derivative of a function. इसके लिए आप ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करोगे और आप f प्राइम भी इस्तेमाल कर सकते हो. It also represent the instantaneous rate of change or the derivative of the function. So continue with the same worked example जो हम पीछे कर रहे थे. हमने जो डिफरेंस क्वोशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट वाज 6x plus 3h minus 4. अगर उस सेम डिफरेंस क्वोशिएंट की वैल्यू पर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ एंड दैट इज h अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा? व्हेन वी सब्स्टिट्यूट h की जगह हमने जीरो को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रहता है दैट इज 6x minus 4. द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू 6x minus 4. That's all. In the next lecture we will discuss the laws or rules to compute the derivative directly or in the easiest way. Thank you.